Hello and welcome to the Aamir Qutub Show, India's leading show for jobs and careers. If you are looking for your first job, thinking of switching jobs, or seeking the best career guidance, then this is the place for you. To all our subscribers out there, thank you for tuning in. If you have any questions, comments, suggestions, or advice, you can get in touch with us on LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, or you can visit our website www.aamirqutub.com. Presenting Aamir Qutub, CEO of the Aamir Qutub Academy. Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, everyone. Hello, everyone. Thanks a lot for joining me again for this amazing live session. And this is Aamir Qutub. And today in this live session, I'm going to talk about freelancing, how you can actually create your career as a freelancer. Now, as you know, it has been a long time that I had my last session because I was actually away on the holidays. So I'm back now. And this year is going to be great because I'm going to work with you to actually help you develop your career. The format is pretty simple. We are going to talk about freelancing, how to you can develop your career as freelancer. And then if you have got any questions related to this topic, I would encourage you to ask your questions in the comment section. It's a very simple, straight away format. And we already have people joining us. We've got Faisal who has joined us from Facebook. Welcome, Faisal. Thank you so much for joining us. And we've got lots of people from LinkedIn who has joined us as well. All right, so let's get straight into it. We are going to talk about freelancing. So what exactly is freelancing? Now, freelancing can be defined as a work that you do on an individual basis, which is basically a contract-based work or a fixed work, which means you're not working as an employee of a company. You are working for a particular project or for a particular duration of time, which means you are not owned by an organization or you are not employed by an organization. You are working for yourself, but then you are working on contract for a particular company. It could be a very small project that you are working on, say like few hours worth of project. एक बहुत सिंपल सा काम जैसे कि ये छोटा सा जो है वो लोगो बनाना है, छोटी सी एडिटिंग करनी है. It can be something as simple as this, or it can be a 1 year, 2 year, 3 years project as well. But generally, when we look at freelancing, the projects, the majority of projects that we see are basically few hours or at least few months. ये years में जो है वो extend नहीं होते हैं. And then secondly, as a freelancer, you are not working only for one business. You are generally working for multiple business. जैसे different projects हैं उस पे आप जो है वो different business के लिए जो है वो work कर रहे होगे. What is the benefit of freelancing? The biggest benefit of freelancing is, first of all, you earn money. That's a big benefit of doing anything. You earn money doing freelancing, but secondly, you gain experience while working as a freelancer, and this experience counts towards your CV. And if you want to later on apply for a job, you can show your work experience as a freelancer. And number 3, it helps you develop a better understanding. You learn faster when you are working as a freelancer rather than doing one course or another course, because as a freelancer, you are actually implementing. So you are getting the real industry experience. But most importantly, you are developing networks. So the way I started my career was, when I resigned from Honda, and I wanted to start my own business, but I did not know how to do business. So I started doing freelancing. And just by doing freelancing, I was working with clients in US, in UK, in Australia. I started talking to them and I started understanding about the market. I asked them about different markets. And one of my clients suggested me that I should move to Australia and do my study from there so that I could probably establish my business over there. So just the contacts and networks that you develop through freelancing are absolutely amazing. So now the question arises, how do you actually venture into freelancing? So there are a lot of websites that are out there जो कि different level पे होती हैं. For example, Upwork.com is a very high level freelancing website. It's an absolutely amazing website. There are people who are just earning through that, and you can earn a huge amount of money just working as a freelancer on Upwork. Then there are some extremely low pay websites, low level websites like Fiverr.com. The concept of Fiverr.com is that a person can do something in as low as $5.
but $5 becomes 300 Indian rupees, becomes 600 Pakistani rupees, and so on. So although it's $5, but $5 is the minimum amount. Fiverr.com पे भी लोग $200 में, $300 में, $500 में, $1000 में जो है वो काम करते हैं. So again उसकी कोई लिमिट नहीं है कि सिर्फ लोग $5 में काम कर रहे हैं, $10 में काम कर रहे हैं. Before I take your questions, एक क्वेश्चन जो मुझसे लोग जनरली पूछते हैं वो ये कि how much you can earn in freelancing. Okay, so now again there is no limit to what you can earn in freelancing. You can earn, say, if I have to talk about in rupees, you can earn 1000 rupees per day in freelancing. You can earn 1000 per week as well in freelancing as well. I know some people like mere hi dost who are earning like 2 lakhs, 3 lakhs per month just by doing freelancing. और वो लोग Upwork वगैरह पे नहीं, सिर्फ Fiverr.com पे they are earning that much. There are some people who would earn like 10,000, 15,000 per month in freelancing. But if you are giving it full time and if you have developed a profile and portfolio, what I have seen is that an average freelancer would earn between 20,000 to 50,000 rupees just doing freelancing. But then there are both extremes. उसकी कोई लिमिट नहीं है. आप जैसे जैसे आपकी प्रोफाइल इंप्रूव होती रहती है, आप बहुत अर्न कर सकते हैं just as a freelancer. And there are some people, not some people, there are lots of people who are just living their life as a freelancer. As a freelancer, you don't have to be in a particular country. आप दुनिया में कहीं पे भी हो सकते हो, आप घूम सकते हो, आप कहीं पर भी हो सकते हो, आप अपने घर पे रह सकते हो, आप अपने ननिहाल में रह सकते हो, अपने ददेहाल में रह सकते हो. You can move with your loved one as well. आप कहीं पर भी हो सकते हो and और अपना काम जो है वो कर सकते हो without any restriction. So it's your like life on remote work all the time. तो आपको ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के ऑफिस जाना है. You can work on your own terms and conditions as well. But of course शुरू में थोड़ा सा हार्ड वर्क होता है and you have to develop your profile. But once you develop your profile as a freelancer, then it gives you a huge amount of independence. तो आइए आप लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं और फिर वहां से जो शुरू करते हैं. फैसल अहमद का क्वेश्चन है, सर व्हाट इज फ्रीलांसिंग. आई थिंक हमने इस पे पहले से ही बात करी कि फ्रीलांसिंग इज एनी एक्टिविटी, फैसल, दैट वी डू वेयर वी आर नॉट एम्प्लॉयड बाय वन कंपनी. व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टेकिंग स्मॉलर प्रोजेक्ट्स बाय डिफरेंट कंपनीज एंड देन वर्किंग फॉर देम. It's a very good way to earn money and gain experience as well. So Kamrul Islam saying, I'm also interested. If you are interested, I would encourage you to start now, Kamrul. स्टार्ट टुडे. जैसे ये लाइव सेशन खत्म हो जाइए fiverr.com पे, fiverr.com पे, देखिए क्या क्या गिग्स ऑलरेडी अवेलेबल है वहां पे. अपनी फील्ड से रिलेटेड गिग्स सर्च करिए तो उससे आपको आइडिया मिलेगा लोग क्या क्या चीजें बेच रहे हैं, क्या क्या चीजें जो है किस पे वर्क कर रहे हैं. एंड देन यू कैन क्रिएट योर ओन प्रोफाइल. वहीं पे अपनी रजिस्टर कर सकते हैं प्रोफाइल. जो भी गिग आपको अच्छी लगी उसको लगभग कॉपी करिए, उसको थोड़ा बहुत चेंज करिए एंड देन पुट योरसेल्फ आउट एंड देन फ्रॉम देयर सी व्हाट टाइप ऑफ गिग्स यू कैन एक्चुअली गेट फ्रॉम देयर. It's a very, very, very simple way to get started. All right. So Shoaib Akhtar is saying, मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख रहा हूँ. जब मैं वेबसाइट बनाना सीख जाऊंगा तो मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट में चालू कर सकता हूँ या पहले जॉब करनी होगी 2 या 3 साल. ओके शोएब, अगर आप वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि जितना आपको आ गया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप अभी से फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दीजिए. आप ये वेट मत करिए कि जब मैं पूरा सीख जाऊंगा, जब मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा तब फ्रीलांसिंग करूंगा. तो 2-3 साल जॉब करने की बात तो बहुत दूर की है. लोगों को ये लगता है कि फ्रीलांसिंग के लिए या घुसने के लिए फ्रीलांसिंग में उन्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए. ऐसा नहीं है. आप फ्रीलांसिंग में घुसते पहले हो, काम करते हो और काम करने से एक्सपीरियंस आता है मेरे भाई. आप ऐसा नहीं होता कि आपने एक कोर्स किया अब आप सोचो कि मैं पहले बहुत प्रैक्टिस कर लूं फिर उसके बाद मैं फ्रीलांसिंग में जाऊंगा. मैं तो इनकरेज करता हूं कि आप जाओ फ्रीलांसिंग में और fiverr.com में प्रोफाइल बनाओ और आप बोलो कि मैं $5 में पूरा काम करके दूंगा आपका, या उससे भी कम में पूरा काम करके दूंगा, सो दैट आपको असली काम करने का एक्सपीरियंस मिले, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिले और उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है. आपको मजा भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है. और मेरी सीखने की जो है वो यही अप्रोच रहती है. तो इवन जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अभी लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं या बाद में सुन रहे हैं, उनको भी मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप इस चीज का वेट मत करो कि मैं पहले अपना कोर्स कंप्लीट कर लूं फिर मैं फ्रीलांसिंग करूंगा. फ्रीलांसिंग आप आज स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आप 8th क्लास में हो, 5th क्लास में हो, चाहे आपकी उम्र 12 साल है, चाहे आपकी उम्र जो है 52 ईयर्स है. इट डजंट मैटर. वेयरएवर यू आर विथ योर लाइफ,
you can start freelancing right now from today. There are no restrictions. There is no degree required. There are no qualifications required. You don't have to be expert at something. You can create your profile and start working from there. And you make mistakes. You learn from those mistakes, and then you'll grow your profile from there as well. Jamshed Khan is saying, hi Jamshed. Fahmuddin, which freelancing website is good for beginner? So as a beginner, I would encourage you to get started from Fiverr.com, Fiverr.com. It's a very nice website. There are lots of websites out there like Freelancer, Elancer, Upwork, and People Per Hour, and so on. But what I find is that Fiverr is a good website to get started with, because expectation of people is pretty low over there. और काम भी जो है वो they are very simple. Like people won't give you very complicated tasks. They will give you very simple tasks. You can say, I'll do this for you. It can be as simple as I can remove the background of a photo for you. Like that could be a very simple gig. Or I can write 200 words for you. That could be a simple gig. So something as simple as that is something that you can get started with. And then while you are gaining experience, you can learn from that experience, and then you can grow yourself from there. All right, Navjot Kaur. Navjot is saying, I have 2 years of project officer experience. Now I want to do freelancing. Don't know where to start from. Navjot, it's very simple. What I would encourage you to do, because you have got experience, is create your profile on Upwork.com, Upwork.com. But also do a bit of search of project managers, project officer, project coordinators, and you will find a lot of people. Look at their profile. Find the things that you like about those profile, and then create your own profile. Just register on their system, create your profile, answer all of the questions. And once you have created your profile, share your Upwork profile on LinkedIn, send it to all of your friends as well, send it to all of your contacts as well, and tell them that I've started freelancing. Can you please share this profile? And that's how you will get your first job. It's very simple. मतलब freelancing जो है start करना is extremely simple, because the websites would tell you exactly what you need to do. Websites are waiting for you to register because their business model depends on it. So what you have to do right now is go after the session is go to Upwork.com, click on register, and create your profile from there. And they will ask you the question, just keep on answering them, and your profile would be ready. They have got all the resources that you need to start working as a freelancer as well. Akshadamke is saying Fiverr.com is safe. If it's a question, yes, it's 100% safe. And it's not Fiverr, it's Fiverr. Fiverr. It's like five, Fiverr with double R. Okay, so Faisal is saying, sir, freelancing के लिए क्या skill सीखा जा सकता है, या क्या freelancing के लिए skill कहाँ से सीखें? ओके, तो फ्रीलांसिंग जो है वो आप बहुत सारी फील्ड में कर सकते हो. आप फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिजाइनिंग में कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हो, आप डेवलपमेंट में कर सकते हो, आप कंटेंट राइटिंग में कर सकते हो, आप गाना गाने में कर सकते हो, आप मूवी बनाने में कर सकते हो, आप खाने की फोटो खींचने में कर सकते हो. यू कैन डू फ्रीलांसिंग इन सो मेनी थिंग्स. अगर आप जाके देखो ना Fiverr.com में इतने सारे आपको अलग अलग तरह के जो है वो लोग बोलेंगे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा. तो यू कैन डू फ्रीलांसिंग इन सो मेनी थिंग्स. व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई इज कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा पर्टिकुलर स्किल है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं. जब आप ये डिफाइन कर लोगे तो फिर उसमें आप अपने स्किल्स को जो है एक्सपैंड कर सकते हो और उसको सीख सकते हो. यूट्यूब से देख सकते हो, बाकी जगहों से देख सकते हो, और कोई बहुत अलग से आपको फ्रीलांसिंग के लिए कोर्स करने की जरूरत नहीं है. अगर आप यूट्यूब वगैरह से उस स्किल को सीख जाओगे और फिर उसके बाद अपनी प्रोफाइल बनाओगे, तो वहां से जो है वो धीरे धीरे आप जैसे काम करते रहोगे वैसे वैसे एक्सपीरियंस आएगा. जैसे मैंने जब अपनी कंपनी खोली थी या फिर जब मैंने फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट किया था, ऐसा नहीं था कि मैं ऐप डेवलपमेंट चैंपियन था. मैंने थोड़ा बहुत ऐप डेवलपमेंट पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने जो है वो फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दी. जैसे जैसे हर एक प्रोजेक्ट आता रहा वैसे वैसे मुझे एक्सपीरियंस आता रहा. आज भी डिजिटल वर्ल्ड इतनी बड़ी है, मेरी 3 कंपनीज हैं, 8 स्टार्टअप्स में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, मुझे हर चीज के बारे में नहीं पता होता है. व्हाट आई डू इज कि जैसे जैसे मेरे पास कोई प्रॉब्लम आती है, प्रोजेक्ट आता है, वैसे वैसे मैं उस चीज को सीखता हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ. तो आप कभी भी परफेक्ट नहीं होगे कभी भी, और इस चीज का वेट मत करो कि मैं परफेक्ट हो जाऊं, मैं बैचलर कर लूं, मास्टर कर लूं, पीएचडी कर लूं. ये सब बकवास बातें हैं. आप स्टार्ट कर दो, और ऑफ कोर्स गलतियां होंगी. होता क्या है ना कि हमारे इंडियन सिस्टम ने
हम लोगों को ये सिखा रखा है कि फेल होना बहुत बुरी बात है, जबकि मुझे ये लगता है कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप कोई चीज ट्राई करो, उसमें फेल हो, जब फेलियर हो उससे आप लर्न करो और फिर से ट्राई करो। लेकिन जब आपका सिस्टम आपको ये सिखा देता है कि फेल होना गलत बात है, कि आपने कोई प्रोजेक्ट पकड़ा, आप जो है वो सही से नहीं कर पाए, तो आप फेल हो गए, और फेलियर से जब इंसान को शर्म आने लगती है तो वो लाइफ में कुछ ट्राई नहीं करता है। आप में से बहुत सारे लोग जो आज मेरी वीडियो देखेंगे बोलेंगे हाँ मुझे भी फ्रीलांसिंग करनी है, मुझे भी करना है, लेकिन आप सोचेंगे शायद मैं रेडी नहीं हूं, आज मैं रेडी नहीं हूं, मैं आज नहीं करूंगा, मैं कल करूंगा, मैं परसों करूंगा। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज, बिकॉज you will never be completely ready. You know, if you are interested in freelancing, then you should start doing it right now, today itself, because if you won't do it today, then you won't be able to do it tomorrow, क्योंकि फिर आप जो है उस प्रोकास्टिनेशन के लूप में फंस जाते हो। तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि इफ यू थिंक दैट यू आर इंटरेस्टेड, देन यू शुड स्टार्ट डूइंग इट स्ट्रेट अवे, डोंट वेट फॉर एनीथिंग। Alok Dwivedi saying very correct, thank you so much. Akshay Damke saying, can please share the list of freelancing websites? Actually, you don't have to go for a lot of websites. Fiverr.com, freelancer.com, peopleparar.com, and upwork.com, and just do a Google search freelancing websites and you will get all of these in the list. That's pretty easy. So Sheikh Hamid is saying, how to get a freelance project as beginner. So now if you want to get a freelance project as beginner, because what happens is when you start on a freelancing website, what you would see is that you do not have any reviews and you won't get very quick responses as well. The very first thing that you do is that you sell your service at a very cheap rate and you provide huge amount of value, right? For example, if you are doing a gig of content writing, right, then if everyone is selling 200 words for content writing for $5, you say I'll write 2000 words, I'll do proofreading, well research, blah blah blah, for $5, right? Just provide huge amount of value for the very first gig, right? The problem is because on Fiverr.com you cannot offer it for free. Even on Upwork.com you cannot offer it for free. But choose the minimum amount that you can choose and provide huge amount of value, like extremely huge amount of value. That's the very first thing. The second thing is make sure that you share your profile on LinkedIn. Individually message all of your connections on LinkedIn. Tell them that this is the stuff that I've started doing. Can you please help me get a work? Extremely important that you do that. Make sure that you are attentive. Make sure you have got everything that's actually complete in there, and try to get one project from somewhere, from your connections, from your friends or whatever. Just try to get one project from them. चाहे आप even अपने भाई से, even from your friend, just ask them to create a profile on Fiverr. Just do that transaction and get that 5-star reviews. Get that initial reviews, because once you have got one review, once you have got one job done, then it's much easier from there. अभी शुरू में for the first 3 jobs, what you do is you keep your price extremely low, keep value extremely high. Once you do 3 jobs, you can change your gig now. Now you can put your prices up. Now you can sell it at the full rate. It's about doing those 3 jobs, exceeding the expectations, getting the best reviews. Once you have those reviews, then your freelancing career has started. Then it's much easier from there. All right. So Junaid Khan from YouTube. I tried to create an account on Upwork, but they denied. Okay, so if you try to create an account in Upwork and they denied, then reach out to their help center and tell them that you try to create an account, why they denied. And also, Junaid, tell me what was the reason. Read the reason that they have denied your account. They must have provided you next steps. So read those and try to create your profile again from a different email ID and see what response do you get. Vikas Tyagi, hi Vikas, how are you? शुएब अख्तर, फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेशर के लिए कौन सी फ्रीलांसिंग वेबसाइट बेस्ट है? fiverr.com, fiverr.com. मैं फाइवर का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, बस मुझे ये पता है कि फाइवर पे जॉब्स मिलना इजियर होता है, रिलेटिवली इजियर होता है जो इनएक्सपीरियंस लोग होते हैं उनके लिए. विकास त्यागी सर, जॉब चेंज टू करेक्ट वेबसाइट, व्हाट डज दैट मीन? Fahimuddin, sir, I don't have any ideas to create effective profile. What strategy might be good for beginner? Fahim, the best strategy for a beginner would be look at a freelancer, like when you go to say Fiverr.com. If you want to do a profile for content writer or say search engine optimizer or graphic designer. Now,
find graphic design, look for graphic designing skills, look for the profile that has got like maximum reviews, that is like a really good top seller. Click on their profile and read what's written on their profile. What you can do is just copy that profile, like make it in your own words, but you can use the similar keyword, a similar image. Now to create the image, you can go to canva.com, canva.com. There are a lot of templates that you can use, but so more about just looking at those top 3 profiles and copying it from there. Look, the thing is, I can give you a lot of tips, but those tips are already being taken by the people, and all of those things are actually available live on Fiverr or Upwork.com. You can go there straight away, look at their profile, just copy what they have done, just change the wordings a bit, and your profile is ready. I think that's the best way to get started as a freelancer. And from there, you can make your own tweaks and try and test different things and see whether that's working or not. But to start with, you can just start by taking inspiration from what's already there and the methodology that are actually proven. Parvez Vasha, hi sir. Hi Parvez, how are you? All right. Rishabh Sugandhi. Hello, I'm pharma background, so can I do freelancing while can I handle my job too? Of course. Itne sare log, there's so many people out there who are doing their jobs as well as freelancing at the same time. So they will do, because your job would be what, 9 to 5, 9 to 6. Then you have got so much of time after that. You can easily do freelancing. Like I have a lot of people working in my organization who work in my company and then they would do freelancing. Similarly, I hire a lot of freelancers who are working in some company, but they do work for me in their free time. So yes, you can easily work as a freelancer. And there are a lot of freelancing opportunities in B Pharma or pharmacy as well. You can write pharmacy articles for pharmacies, articles for medicine organization, articles for health organization. You can do a whole lot of stuff that's actually out there. So definitely you can do both. You can work, handle your job as well as do freelancing. That's what a lot of people already do. Saurav is saying that's true. Thanks a lot. Ahmad Hussain Khan Alik, hello sir. Yes, I'll try freelancing. Yes, bro. I recommend each and everyone to try it. And thank you so much for listening to my advice. UFA FC, shall I do CA or engineering? भाई एक बात बताओ कि आप खाने में क्या खाना पसंद करोगे, बटर चिकन या फिर पनीर टिक्का? The answer is, I cannot tell you what you want to eat, right? It's your choice. Like if you want to do CA, go for CA. If you are interested in engineering, you can go for engineering. The most important thing that you need to understand is, okay, what are you interested in? What are you passionate about? What is something that actually interests you or attracts you, right? You know, there are a lot of people who would say, अरे engineering का scope बहुत है, अरे CA का scope बहुत है. ये इंडिया का जो mindset है, approach जो है scope के बारे में, वो गलत है. क्यों? क्योंकि every field out there has got its own scope. डिपेंड ये करता है कि आपको उसमें कितना इंटरेस्ट है, उसमें आप कितना एक्सेल कर पा रहे हो. इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है, सीए का बहुत स्कोप है, राइट? आर्ट्स का बहुत स्कोप है, सोशल साइंस का बहुत स्कोप है. डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना ज्यादा इंटरेस्टेड हो, उसमें कैसे जो है वो अपने करियर को आगे लेके जाना चाहते हो. आई कैन टेल यू अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स आउट देयर हु आर जॉबलेस. ठीक है, आई कैन टेल यू अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर who are preparing for CA or who are giving examination of CA, they are not able to qualify their examinations as well. क्यों? क्योंकि वो लोगों ने वो चीज परस्यू करी लोगों के कहने पे, बट दे डिड नॉट लिसन टू देयर हार्ट. अपने दिल की सुनो, ये देखो कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है. अब आप बोलोगे मुझे पता नहीं है किस चीज में इंटरेस्ट है. वो इस वजह से नहीं पता है क्योंकि आपने आज तक किसी सीए से बात नहीं करी और ये नहीं समझने की कोशिश की कि उसका काम क्या है. लिंक्डइन पे जाओ, रीच आउट टू 50 CAs and just say, I just want to talk to you for 2 minutes. I just want to understand how's your job like. Talk to 50 engineers out there. अपने आसपास ढूंढो. You will find a lot of people out there. Just ask them, how's your job like? What do you have to do? And then read about that. YouTube पे search करो. Life in a day of a CA, life in a day of an engineer, mechanical engineer, electrical engineer, computer engineer. Once you do that, you do a bit of research, then you will be able to make up your mind and decide what you want to do with your life. So CA and engineering are not two options. There are so many options that are out there apart from these two as well.
Do you have your YouTube channel? If you have, please share the link. Fahimuddin is asking. Yes, I have my YouTube channel, bro. If you just go and search me on YouTube, Aamir Qutub, I'll share the link at the end as well. Please follow me on YouTube, but also please connect with me on Instagram. Anyone who's listening out there, please make sure that you connect with me on Instagram, because I do a lot of reels that I don't do on other social media channels. I do like a lot of live sessions on Instagram as well. Like I do 2 or 3 live sessions every week on Instagram. I talk to my Instagram family one on one. बाकी social media channels पे नहीं हो पाता है, but I am able to communicate with you regularly on Instagram. So please make sure that you're following me on Instagram, which is Aamir Qutub, AAMIRQUTUB, and then make sure that you are connected with me on YouTube as well, because you will get a completely different perspective on these 2 channels. Cadet Zahir Abbas, I have joined logistics analytics company as a freelance. What designation should I choose for my market profile? That's a good question. I think when you are choosing a designation, what you have to do is you need to do first of all a bit of research on LinkedIn and find out what is the most common designation for something like this. Because you have mentioned that you've joined a logistic analytics company as a freelancer, but what is your role in that company? Are you doing development? Are you doing data security? Are you doing hacking? Are you doing analytics? Are you doing what? So it's important to do that. For example, if you're in data, you could go for data miner or whatever it is, or data architect or data engineer. So right now, because I don't know what you are doing in that company, I can't suggest you the designation itself. Arshad Hussain is saying Fiverr is not helpful for newbies. Arshad, I'm not sure why you're saying that, and on what basis are you saying that. What I know is that there are a lot of people who create their profile on Fiverr and then just sit like this, and then they say, I'm not getting any jobs. They say, I've created my profile on Fiverr, I'm not getting any jobs. There's so many people out there who started and they are getting jobs. Why are you not getting jobs, right? What are they doing there in their profile that they are getting jobs, right? And they started from somewhere as well. जितने भी लोग हैं fiverr.com पे, उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया हुआ ना, उनके पास भी जॉब्स आ रही हैं, वो वहां से जॉब्स बिल्ड कर रहे हैं. And that's why I told you a trick, that first of all, make sure that you are taking inspiration from an existing profile that's doing pretty well, number 1. Number 2, reach out to your contacts and connection. और एक $5 की गिग, ₹250 की गिग जो है, किसी से, अपने दोस्त से, किसी से भी जो है वो करके जो है वो करवा लो, so that you get a review out of that. Once you have a review, then it's much easier to get further gigs. Of course, I know that getting first gig is difficult. Once you get first 2 to 3 gigs, then it's much easier from there. प्रॉब्लम क्या है हमारी जनरेशन की, दैट वी गिव अप टू फास्ट. लाइक आप क्या सोचते हो कि आपने लोग जो है वो वेट कर रहे हैं आपको काम देने के लिए, आपने फाइवर पे प्रोफाइल बनाई, लोग जो है आ जाएंगे, सर प्लीज जो है आप हमारा काम कर लीजिए. It doesn't happen like that, bro. In anything, like if you are looking for jobs and stuff, if you are looking to do any business stuff, if you are looking to do freelancing and stuff, right? The easiest thing to do in life is कि पहले अपने बैचलर्स करो, मास्टर्स करो, पीएचडी करो, राइट? यही करते हैं हम लोग, पढ़ाई कुछ जाता नहीं है, एडमिशन जो है लेते रहते हैं माँ बाप के पैसों पे, एक लिया दूसरा लिया, या एग्जाम की तैयारी कर ली थोड़ी बहुत खुश हो गए, एंट्रेंस निकल गया, फिर पढ़ाई कर ली, फिर बैचलर कर लिया, फिर मास्टर्स कर लिया, फिर पीएचडी कर ली. जब आप रियल वर्ल्ड में जाओगे तो रियल वर्ल्ड डिफिकल्ट है. जॉब करना इज अ डिफिकल्ट थिंग, इंटरव्यू देना इज अ डिफिकल्ट थिंग, फ्रीलांसिंग इज अ डिफिकल्ट थिंग एज वेल. फ्रीलांसिंग के पर्क्स भी तो देखो आप कितने हैं. Of course, it's a difficult thing. Of course, ऐसा नहीं होता कि you just get started and then you'll start getting jobs. But what you have to do is you have to work towards it. But if you do it consistently, you will definitely get a job out of it. Muhammad Shabir is saying, hello sir, how could I made my freelancing effective? I tried out many times with almost 25% success. I am building utility and architecture freelancer. 25% is a good percentage, Shabir, for freelancing. So when you're saying 25% success, which means you're saying if I'm sort of reaching out to, say, 10 people, only 2.5 are getting converted. Or if I'm reaching out to 100 people, I'm converting 25 people, which is great, bro. Like, absolutely amazing. Like, if
as a company, if a company does reach outs, if they get they convert one like 10% out of whatever they have applied for, that's a great outcome. So first of all, 25% is a great outcome. But secondly, again, look at the freelancers who are already doing it pretty well. The third thing is that as a freelancer, what I've seen is that depending upon, for example, if you are doing freelancing on Upwork, what I see is that मैंने कोई job डाली, people will just start responding to that straight away without even looking for what I'm asking for, what are the things that you need, and so on. So it's important to read and understand the brief first. It's important to ask the right questions as well. जितने अच्छे आप क्वेश्चन पूछोगे उतना ज्यादा ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होगा. सेकेंडली, इट्स इंपॉर्टेंट टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप वन ऑन वन. Build that relationship one on one with the person that you are reaching out to. So once you have seen the job, look at what they are after, go extra mile to develop a proposal, do a video proposal. Are you doing video proposals at the moment? So एक website है Loomly, LOOM. What you could do is you could do a video proposal in that. और उसमें क्या करो, अपनी स्क्रीन शेयर करो उस प्रपोजल को, उस जॉब रिक्वेस्ट को देखते हुए with your photograph and say, hey, whatever, John, I looked at your job request. Look, I am so you are an architect freelancer. So you say, I am an architect and I'm extremely interested in working with you because your job requirements match my criteria. I have done this work in the past, and just by looking at your job, I can see that this is how I can help you. You have mentioned this problem, and this problem. I think this is the most effective solution. Look, I'm really looking forward to just having a one-on-one catch up with you. If we can get 15 minutes and I can talk to you about how I can help you, that would be great. Something like that. Like एक आपने वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके क्लाइंट को भेज दिया. What you would see is that your conversion rates would increase pretty quickly. It's the art of selling. जब अपना फेस आगे डाल देते हो तो first of all it doesn't seem like के कंप्यूटर पे जो है कोई बंदा जो है वो is just applying for it. You can see person's face. You can see के person जो है he understands what I'm asking for. एक connection बनता है, and then you ask for the meeting. Once you do that meeting, that's when you close the client. So it's थोड़ा सा जो है वो सेल्स जो है वो इसमें जो है वो समझना और लाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है. Okay, Arshad saying no one can give any project for newbies. भाई तो जितने भी newbies हैं वो कभी ना कभी तो newbies होती है ना, उनको कहाँ से प्रोजेक्ट मिलता है? वो मिलता है प्रोजेक्ट. You just have to struggle a bit hard. जब मुझे अपना पहला प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया में आया था, मुझे ढूंढना था, मैं तो पागल हो गया था लोगों के पीछे जा जाके, मतलब बस में, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन तक पे जो है आई जस्ट यूज्ड टू रीच आउट टू पीपल एवरीवेयर. ऑफिसेज में जाके जो है मैं अपना प्रोफाइल जो है वो ड्रॉप करता था. और ऑफ कोर्स टाइम लगा, मुझे 3 महीने में अपना पहला प्रोजेक्ट मिला. फ्री में मुझे करना था वो प्रोजेक्ट, कोई पैसा नहीं था, बट आई डिड इट. और उसी से जो है वो आपका एक्सपीरियंस बनता है. So of course no one can give any job for newbies. ऐसा नहीं है, आपको as a newbie मिल सकती है. जैसे आपने मेंशन किया अर्शद, how I find good job in graphic designing, work from home. So Arshad, if you want to do a job for graphic designing, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको. जितने भी लिंक्डइन पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे बोलो कि सर आई वांट टू डू ग्राफिक डिजाइन फॉर यू, आई विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग. मैं आपको के नेक्स्ट 10 पोस्ट जो है वो आपको एडिट करके दूंगा. ठीक है, आप ऐसे जो है वो रोज 50 लोगों को इंस्टाग्राम पे रीच आउट करिए, रोज 50 लोगों को लिंक्डइन पे रीच आउट करिए या यूट्यूब पे रीच आउट करिए. 50 people every day and just tell them that I want to provide all the graphics to you for free. मैं आपको शर्त लगा के बोल रहा हूँ कि आपको 1 हफ्ते के अंदर जो है वो काम मिल जाएगा. People would engage you, उससे आपका पोर्टफोलियो डेवलप होगा, एंड वंस योर पोर्टफोलियो डेवलप्स, फिर उसके बाद इट्स मच इजियर टू गेट वर्क फ्रॉम हियर. या फिर किसी को अगर आपका काम पसंद आएगा, देन दे विल एंगेज यू इन अ पेड अपॉर्चुनिटी. थोड़ा सा रीच आउट करना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है. घर पे बैठे बैठे कोई चीज नहीं आती है. थोड़ा सा जो है आपको अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल के जो है वो रीच आउट करना पड़ता है.
आप एक बार ट्राई तो करके देखो, 50 इन्फ्लुएंसर्स को यूट्यूब पे, 50 इन्फ्लुएंसर्स को लिंक्डइन पे, 50 इन्फ्लुएंसर्स को इंस्टाग्राम पे रीच आउट करो. टेल देम दैट यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर, यू रियली लाइक देयर वर्क, and you want to work for them, you want to do whatever 20 designs and ebook design, whatever you do for free for 1 month. Just offer them. और फिर देखो कितने सारे लोगों का रिस्पॉन्स आता है. जस्ट ऑफर देम अ बिट ऑफ हेल्प, जस्ट ऑफर देम अ बिट ऑफ सजेशन कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, आपकी जो ग्रिड है इट्स नॉट अप टू द मार्क, आई कैन इंप्रूव योर ग्रिड, हियर इज अ सजेशन, व्हाट डू यू थिंक. सो द पर्सन वुड लाइक इट एंड से ओके लेट मी डू सम इंप्रूवमेंट्स फॉर यू फॉर फ्री. अगर आपको लगता है बेनिफिट है तो आप मुझे आगे एंगेज करना, वरना कोई बात नहीं. That's how you will get work experience. That's how you will get job, right? अभी आपकी कोई रेपुटेशन नहीं है, अभी आपका कोई ट्रस्ट नहीं है, आपके अंदर कोई जो है वैल्यू जो है वो डेवलप नहीं है. So no one is going to come to you and say, you know, अर्शद भाई प्लीज जो है वो हमारे लिए काम कर दीजिए. ऐसा होगा बट तब होगा जब आप अपनी रेपुटेशन जो है वो डेवलप कर लेंगे, और उसके लिए जो है वो आपको खुद से रीच आउट करना पड़ेगा. ऑलराइट, यूएफएफसी विच इज बेटर, सीए और इंजीनियरिंग. मेरा इंटरेस्ट तो सीए है, पर वही स्कोप क्या मेरे भाई, सीए का स्कोप किसने बोला कि नहीं है. देश जो है वो सीए चला रहे हैं, पता है, मैं सच बता रहा हूँ, देश चलाने वाले जो है वो सीए हैं, पूरी इकोनॉमी चलाने वाले सीए हैं. क्या बात कर रहे हो स्कोप की यार, बहुत 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 स्कोप है सीए का. ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट सीए में है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आप सीए में जाओ, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूँ, मुझसे साइन करवा लो कहीं पे. ठीक है, माँ बाप अगर जो है वो बोले मेरी वीडियो दिखा दो, मुझसे बात करवा दो, मेरी वीडियो दिखा दो. अगर आपका इंटरेस्ट सीए में है, किसी और फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है. आप जिंदगी में सक्सीड नहीं कर पाओगे, ये भी लिख के ले लो, अगर आप उस फील्ड में नहीं जाओगे जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है. एज सिंपल एज दैट ब्रो. इफ यू हैव गॉट इंटरेस्ट इन सीए then go for CA, as simple as that. स्कोप सब बेवकूफी की बातें होती हैं, बिल्कुल स्कोप है और बहुत स्कोप है. ठीक है, और किसी फील्ड में जाने की आपको जरूरत नहीं है. कोई कहता रहे, कुछ भी कहता रहे, पेरेंट्स बोले, टीचर्स बोले, ये बोले, वो बोले, शर्मा जी का लड़का, ये वो, doesn't matter at all. You know, if you are interested in CA, then go for it. Sorry guys, I'll hold you on for a minute because मेरा लैपटॉप जो डिस्चार्ज होने वाला है. Hey everyone, सॉरी दोस्तों, मैं ऐसा भावुक हुआ कि मेरा जो मैं याद ही नहीं रखे, मेरा लैपटॉप जो है वो चार्जिंग पे नहीं था. आई होप यू आई एम बैक एंड यू कैन सी मी. इफ यू कांट सी मी देन लेट मी फिक्स दैट फॉर यू एज वेल. जस्ट गिव मी अ मोमेंट and that should all be fine. Voila. All right. So guys, please let me know if you can see me, and if you can still follow my live. Can you see me? एक comment कोई करेगा please. All right. So Keshav Sharma is asking, so I have 1 year of experience in web development. How do I get permanent freelance work, like for 2 days in week? I already have a full-time job. I'll find such work on freelance site. हाँ बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई. ऐसा नहीं मिलेगा कि 2 days a week वाला, लेकिन आप कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे पकड़ सकते हो जिसमें आपको, फॉर एग्जाम्पल, आप वेबसाइट मेंटेनेंस का अगर काम पकड़ लो,
तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन इजिली डू 2 days इन अ वीक. आप बोलो कि हाँ ये वेबसाइट्स हैं जो मैं मेंटेन करूंगा. Just go on freelancing website, develop your contact from there, and then you can get long projects from her. Upwork is a very nice website for long projects. Fiverr पे जनरली छोटे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, लेकिन Upwork पे जो है वो ज्यादातर जो है वो बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं. तो आई थिंक Upwork पे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा. Upwork पे जो है वो आपको काफी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करने को और देखने को मिलेंगे. आप लोग के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो मैं एक बार चेक कर लूं कि मैं वाकई में कनेक्टेड भी या मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूं. Let's see if I am still live. देखने को मिलेंगे. आप लोग कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो मैं एक बार चेक कर लूं. All right, so I can see the comments over here. चलिए मैं कमेंट्स यहीं से ले लेता हूं डायरेक्टली. Pilot Uzair. Assalam sir. Walaikum. I completed my class 12 from AMU 2020. My dream is to become a pilot. Sir, एविएशन करियर ग्रो करेगा आफ्टर कोविड. सो और ऑस्ट्रेलिया में कैसा करिए एविएशन का? बिल्कुल करेगा भाई. एक बात बताओ, दुनिया तो जो है वो ग्लोबलाइज हो ही गई है ना. अब हम जैसे ऑस्ट्रेलिया के इंडिया में फंसे हुए, हमें तो आना ही है ना ऑस्ट्रेलिया से इंडिया. तो एविएशन जो है वो ग्रो करेगा, ऑफ कोर्स डेफिनेटली ग्रो करेगा. सेकेंडली, as a pilot you can work with commercial airlines as well, you can work with private airlines as well, you can work in जो आपका फ्राइट और कोरियर. अब आप ये देखो ना, ई कॉमर्स जितना बढ़ता रहेगा उतना ज्यादा फ्राइट रिक्वायरमेंट पड़ती रहेंगी. अब जो फ्राइट होता है पूरा वो भी आपका एरोप्लेन से होता है ना. तो ऑफ कोर्स जो है वो प्लेन की जरूरत जो है वो रहती है, पायलट्स की जरूरत रहती है, तो वो रहती रहेगी. ऑल्दो जो आज से 10 साल पहले सैलरीज थी पायलट की, उस लेवल की सैलरीज, उस लेवल की शान नहीं है पायलट्स की. एज अ पायलट्स इनिशियली यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, बट वंस यू एस्टैब्लिश योर रेपुटेशन इट्स अ गुड करियर चॉइस ऑल टुगेदर. सो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि कोविड में ये एविएशन जो है वो खत्म हुआ है. दिस होल स्पेस इज डेफिनेटली गोइंग टू ग्रो. ओके, Cadets there are saying, yep, okay, thank you so much. Amil Mulani, freelancing for students, what are your opinion? Aman Mulani. Aman, my opinion about freelancing for students is that every student should spend their time on freelancing, right? They should not waste their time only studying. ठीक है, मैं खुल के बोलता हूँ. मुझे कॉलेजेस इनवाइट करते हैं बुलाने के लिए, यूनिवर्सिटीज इनवाइट करती हैं, ठीक है, डीन्स के सामने, चेयरमैन के सामने. I am on academic boards of universities over here in Australia. ठीक है, I sit on advisory boards of university. I help them decide their curriculum and I tell them clearly. और ये मैं खुल के बोलता हूँ और खुल के बोल रहा हूँ. Students should not waste their time only studying while they are in college. ठीक है, आपको स्टडी में ही अपना पूरा का पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना है. क्यों? क्योंकि ये जो कॉलेज टाइम होता है, यही टाइम होता है जब आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो. और उसके लिए फ्रीलांसिंग इज अ वेरी गुड थिंग. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आपके करियर की ग्रोथ के लिए. क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो मेरे भाई, ओनली 10%, 5%, 2% जो है वो आपके काम आएगा जब आप अपने प्रोफेशनल करियर में जाओगे. लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग करोगे तो उससे जो एक्सपीरियंस मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज. दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली ह्यूज. सो माय ओपिनियन अबाउट फ्रीलांसिंग इज दैट एवरी सिंगल स्टूडेंट, चाहे आप किसी भी कोर्स में हो, कोई सी भी ग्रेजुएशन में हो, बीएससी में हो, बीए में हो, बीटेक में हो, एमबीए में हो, डजेंट मैटर. आप स्टूडेंट हो, मेरी बात सुन रहे हो, 11th 12th में भी हो, आई डोंट केयर. यू शुड बी डूइंग फ्रीलांसिंग बिकॉज दैट्स द वे टू लर्न अबाउट द करियर, द ओवरऑल कॉर्पोरेट वर्ल्ड, टू गेन एक्सपीरियंस, बट ऑल्सो ऑफकोर्स टू अर्न मनी. बट अर्निंग मनी इज अ साइड पार्ट. ठीक है, हो सकता है आपके माँ बाप के पास बहुत पैसा हो, आपको भी पैसे कमाने की जरूरत नहीं, माँ बाप ने बोला बेटा पढ़ाई में ध्यान लगाओ. लेकिन माँ बाप को ये नहीं पता है कि जमाना चेंज हो चुका है. अब सिर्फ पढ़ने से जॉब नहीं मिलती. इतने सारे ग्रेजुएट, पहले क्या होता था, आपने ग्रेजुएशन किया, इधर जॉब मिल गई. तो वही चीज उन लोगों को पता है, ये ग्रेजुएशन कर ले लड़का तो जॉब मिल जाती है, या ग्रेजुएशन कर ले लड़की तो जॉब मिल जाती है. लेकिन अभी तो ग्रेजुएट करो, कौन कौन जॉब दे रहा है आपको ग्रेजुएशन के बाद या मास्टर्स के बाद या पीएचडी के बाद? कितने जॉबलेस लोग पड़े हुए हैं दुनिया में. वो इस वजह से पड़े हुए हैं क्योंकि अब जो है ओवरऑल सिनेरियो चेंज हो चुका है. अब आपको जॉब पाने के लिए
सिर्फ पढ़ाई करने से आपका काम नहीं चलेगा. जॉब पाने के लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है. अब एक्सपीरियंस कैसे आएगा? एक्सपीरियंस के लिए जॉब करनी होती है. तो मुर्गी पहले आई या अंडा? एक्सपीरियंस के बिना आपको जॉब नहीं मिलेगी, और जॉब जॉब एक्सपीरियंस करने के लिए आपको जॉब चाहिए. उसका सॉल्यूशन यही है कि आप फ्रीलांसिंग करो, आप ऐसे इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट्स करो, चाहे वो आप काम फ्री में करो, चाहे वो काम पेड करो, डजेंट मैटर, बट एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू डू फ्रीलांसिंग. मतलब मैं आई कैन नॉट हाईली रिकमेंड इट. मुझे ये चीज पता होती तो मैं 9th क्लास से ही फ्रीलांसिंग कर रहा होता, ट्रस्ट मी. The amount of time that you waste on studying, of course passing the exams are important, getting a nice decent average marks is important, that's fine. उसके बाद भी आपका इतना टाइम बचता है जिसमें आप इजीली फ्रीलांसिंग कर सकते हो और बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो. ओके, शहजाद आलम, हु इज द इन्फ्लुएंसर एक्चुअली, प्लीज सजेस्ट. अच्छा, शहजाद पूछे इन्फ्लुएंसर कौन है. शहजाद मेरे भाई, influencer, anyone on Instagram who is actually talking about, when I say influencer, anyone who's informing you about the things, right? So there are so many people out there on Instagram or YouTube or LinkedIn who are making videos, who are making informative content, right? Who have got followers. They all are in need for different services. So those are the people who are the influencers that I'm talking about. Sayyid Inayatullah, I'm coming to Australia in fall 2021 to do my master's degree in oil and gas. Can I be a freelancer for big oil and natural gas projects? Yes, you can, but getting a work like this in Australia is extremely, extremely difficult, right? But you can, right? I'm just starting with a disclaimer that once you will come to Australia, and that's something that I realized when I came to Australia, I thought I'm a mechanical engineer. तो एटलीस्ट मैं होंडा में काम किया है, तो मैं एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर काम नहीं मिलेगा तो मुझे कम से कम मैन्युफैक्चरिंग में काम मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कम से कम किसी गैराज में काम मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो किसी शोरूम में काम मिल जाएगा. I applied for 300 jobs. I applied for so many freelancing opportunities. I did not get any because I did not have a huge amount of relevant experience, right? Local experience. यहाँ पे बंदा क्या करता है ना, 10th क्लास के बाद से एक्सपीरियंस गेन करना स्टार्ट कर देता है. That's something that we are missing. There are a lot of skills that we are actually missing when we come to Australia or go to any such country. Especially in Australia, what I've found is it's extremely, extremely difficult to get that job. So you have to start your career by working as a cleaner at an airport to earn money, or washing dishes in a restaurant, or throwing newspapers, or working in a petrol pump if you are lucky, if you get a job. You don't even get a job in McDonald's over here when you come over here in the beginning. Then you develop your network, you reach out to people, you slowly, once you start attending networking events, conference and so on, you will develop your network. And if you keep on applying, if you keep on trying, you will get your first gig. But don't come in the hope that you will get that gig from the very beginning. You will get that, but it would require a bit of persistence and determination. मेहनत लगती है, ultimately successful सब लोग हो जाते हैं. मैंने देखा है, मेरे साथ लोग आए थे, जैसे मेरे 15 लोगों से काफी अच्छी दोस्ती हुई थी, उनमें से 10 लोग जो हैं, दे केम टू ऑस्ट्रेलिया, स्टडीड एंड दे वेंट बैक. दे सेड इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? इंडिया में हम इतने ऐश से जी रहे थे, यहाँ पे इतनी जिल्लत की जिंदगी है, दे डोंट वांट टू गो, सो दे लेफ्ट. 10 पीपल, 5 लोग जो थे वो टिके मेरे साथ, एंड ऑल ऑफ दोस 5 पीपल आर एट वेरी गुड पोजीशंस. उन सबके घर हैं, उन सबके पास अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं. They are at a very good reputable position because they stayed here and they survived. और सबने जो है वो odd job से start किया and then they grew their career from there. All right, Sayyid Inayatullah. Okay, Sayyid Inayatullah, we have done this one. Aman Umlani, thank you sir, it was really helpful. Another question is that, Aman, आपका question मैं अभी लेता हूँ, पहले मैं किलो questions ले लूँ. Dear Aamir, thank you for this session. Do you have any inputs on how to set up a startup, any guideline on how to make your startup idea a success? Absolutely. That's one of my areas of expertise. I have established a lot of startups. I've invested in 8 technology startups myself as well. There is a whole lot of science to it. Actually, if you go on my YouTube, you will find a lot of videos specifically about it as well. And also, if you can connect with me on Instagram, Aamir Qutub is my ID, you'll find a lot of material about that specifically as well. I'll do specific sessions on it as well. But there's a video that I've done on
business model canvas. So I will encourage you to start watching it from there. And hopefully I'm planning to launch a full course on developing a technology startup as well. So once it's done, you will get to know about it. But there's a lot of material that I've developed about this. You can actually go on my YouTube and check it out. All right, guys, we've got 5 minutes left, so I'll just take a few more questions quickly. Is it true that the top company in Australia only prefer PR citizens, so it's better to try applying for it as soon as possible? Absolutely true, Sayyid Anayatullah. Also, the thing is that one of the mistakes that people do is they opt for top companies. Like, it's not like India, right, where TCS or Accenture you will get a job in a large company so easily. Look for jobs in small to medium enterprises, small to medium businesses. Once you develop a bit of experience, then you can apply for jobs in large organization. मेरा एक दोस्त है, बल्कि 2 दोस्त हैं who got a job directly in large organizations as well. तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मिलती नहीं है, मिलती है. थोड़ा सा जो है वो एफर्ट्स, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा एफर्ट जो है वो देने पड़ते हैं इंडिया से ज्यादा. जब आप यहाँ पे आओगे, then you will realize the level of struggle that you have to do. You are all on your own. You have to earn yourself as well. PR, visa, there's a lot of issues over there, and then you have to struggle to get a job. But the thing is that if you do it persistently and you are prepared to go extra way, मतलब अगर आप prepared हो कि मैं कुछ भी करूँगा, right? It doesn't matter. Whatever is required, I'll do it. Then you will definitely get a job. You will be successful. You will be able to settle over here. Keshav Sharma, other than Upwork or other freelancing sites, how can I approach companies for website maintenance or development? LinkedIn. Keshav, LinkedIn से अच्छा अभी तो कोई टूल है ही नहीं. मतलब इतना इजी हो गया है, आपको कुछ नहीं करना है. आप जो भी वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज है, जो भी कंपनीज हैं, उनके वेब मास्टर्स को जो है वो सर्च करो. लिंक्डइन सर्च पे जाओ, एडवांस सर्च से सर्च करो, लोकेशन बेस्ड. रीच आउट टू देम, डू नॉट सेल देम योर सर्विस. से कि तुम्हें उनकी प्रोफाइल के बारे में क्या अच्छा लगा, अपने बारे में बताओ. डेवलप अ one-on-one connection, develop a genuine connection with them, and once you have developed a genuine connection जो कि पर्सनल लगे, फिर उसके बाद you can talk to them about what you are trying to offer. So that's one thing. The second thing is कि आप of course Google पे जाके, वेबसाइट पे जाके उन्हें कोल्ड कॉल कर सकते हो, रीच आउट कर सकते हो. बट आई थिंक लिंक्डइन इज द बेस्ट टूल. लिंक्डइन में सेकेंडली आप ये भी कर सकते हो, आप ये देखो कि आपके सेकेंडरी नेटवर्क में कौन कौन सी कंपनीज है. होता क्या है, लिंक्डइन पे एक तो प्राइमरी नेटवर्क है, जो आपका नेटवर्क है, जो आपके दोस्त हैं. जो आपके दोस्तों के या कनेक्शन होते हैं वो सेकेंडरी नेटवर्क में आते हैं. तो देखो कि ऐसी कौन सी कंपनीज के लोग हैं जो आपके सेकेंडरी कनेक्शन में है, और फिर देखो कि आप दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हो, म्यूचुअल कनेक्शन क्या है दोनों के बीच में, और फिर उस म्यूचुअल कनेक्शन से बोलो कि क्या आप प्लीज मुझे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. दैट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज, जिससे आपको जो है रिस्पॉन्स मिलेगा और फिर उसके बाद उसको फाइनली कन्वर्ट कर सकते हैं इजिली. Bharti Gadkar, can I get project in business intelligence development? Why not? You can. There are a lot of gigs on business intelligence development that you can easily get. Even I actually had a project on business intelligence development. I hired a freelancer from Upwork.com. Fiverr.com is fine for that if you are doing basic gigs for, say, Power BI or something like that. But if you want advanced gigs, then Upwork.com is a good place to be. All right, guys, thank you so much for joining me in this live session. I'll be back with another live session, hopefully on Thursday, 7 p.m. Indian Standard Time, 12:30 a.m. Australian time on Thursday next time. And I'll see you guys with a new topic. Please mention in the comments what topics would you like me to cover. If you have any questions, please mention in the comments. If I've missed your questions, I'm extremely sorry. Please put them in the comments. I'll make sure that I respond to your comments, and we'll definitely see you on Thursday, 7 p.m. Next week. Thank you, guys. Bye-bye. Thanks for joining us for this episode of the Aamir Qutub Show. We hope you gained valuable insights. Don't forget to get in touch with us via LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, or our website www.aamirqutub.com. Stay tuned for the latest news and insights about jobs and careers. I hope you find your next best opportunity soon. Until next time, goodbye.